FOMO, or fear of missing out, is a very powerful tool, but only if used correctly. In fact, I would go to such length कि मैं ये बोलता हूँ that most of the things that we do is because of this FOMO or fear of missing out. Reason being that हम जो इंसान है, we are primarily wired to belong. We are not meant to stay alone. You can obviously disagree with me on this fact, but you can't disagree that human beings were meant to belong in tribes, in groups. प्राइमरीली बहुत हार्ड वायर्ड है हमारे माइंड में ये चीज, सो तुम चाह करके भी इसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते हो. दिस इज द रीजन वाई वी we do so many things and we take so much. For example, we go to parties, we take disrespect. ऐसे ग्रुप में बैठते हैं जहां पर हमारी बेइज्जती हो जा रही है और हम खाए जा रहे हैं. Again, FOMO. We go to the gym, we make new habits, we eat clean, we do so many things, we drink, all because of FOMO. Majority of the things that we do is because of FOMO. Now, I'll prove this to you by an example, a very relatable example. मेरी अपनी खुद की personal story that a relationship. Let's just say you are single right now, okay? Now, for any person who is single, उसके लिए the idea of relationship that fascinates them so much. The idea of having a certain someone who loves you, who with whom you can be yourself, all those things, that it is very fascinating, it is very lovely, right? Now what happens is that तुम्हारे अंदर ये फोमो है, एटलीस्ट मेरे अंदर तो है. मैं तो completely come out and say that हाँ, मैं फोमो का शिकार हूँ, मुझे फोमो होता है. आई हैव अ वेरी बिग फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड आई गेट एंग्शियस एट टाइम्स. आई एक्सेप्ट इट, आई डोंट रन अवे फ्रॉम इट. सो नाउ तुम सिंगल हो, तुम्हें है ये फियर ऑफ मिसिंग आउट दैट भाई तुम्हारी इतनी ज्यादा एज हो चुकी है, तुम लिटरली बूढ़े हो चुके हो, तुम 20-22 साल के हो चुके हो, तुम्हारे पास अब तक एक सर्टन समवन नहीं है जिसको तुम बोल सको कि ये मेरा पार्टनर है. राइट? क्या होगा, क्या पता कहीं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही ना काटनी पड़ जाए. वी ऑल हैव दिस फियर, एक ना एक बार सबको होता है ये. वी आर ओवर थिंकिंग कि आई विश मेरे पास भी कोई होता, मेरा क्या होगा, कहीं मैं पूरी लाइफ ऐसे तो नहीं रह जाऊंगा. Then what happens is that we open social media, Instagram, whatever, and what do we see? We see couples. We see couples who are actually very happy. एंड उसके बाद ये सब देख करके जो हमारी एंजाइटी है, जो ऑलरेडी बोल रही है कि वी आर मिसिंग आउट बिकॉज वी डोंट हैव अ सर्टेन समवन, ये एंजाइटी और पीक पे चली जाती है. हम और घबरा जाते हैं, हमें और ज़्यादा ये फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगता है. सो व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? Maybe we tried finding this certain someone, a partner, through dating apps. We install dating apps, we create a profile, we go on them. And guess what? We actually find this certain someone. You know why? Because every single one of us is in the same whole loop of fear of missing out. Every single one is desperate for a relationship. Every single person wants someone whom they could call theirs, whom they could call their partner, whom where they could belong. So yeah, you find a certain someone, and maybe even if you don't find, अगर तुम्हारी बात नहीं बढ़ पाए आगे dating apps और जगहों पर भी, then at least you now have a friend जिससे तुम बहुत क्लोज आ चुके हो. ये तो पक्का होगा, ये तो पक्का होगा. At least you now have a friend of opposite gender जिससे तुम बहुत क्लोज हो, right? So now things move on. Now maybe let's just hope कि things तुम्हारे लिए perfect है, because मेरे लिए थी, right? So now things are perfect for you. You have this certain someone in your life. But अब क्या होता है? The next time you open social media, you see someone who is younger than you, maybe the same age as you, and they are an overachiever. They have more than you. और जब सब कुछ कंफर्टेबल हो जाएगा, उस टाइम पर तुम्हारा प्राइमरी थॉट ही दोबारा रिफ्लेक्ट होगा ऑन टू योर करियर, बिकॉज तुम्हारी ये वाली जो क्रेविंग है ऑफ हैविंग अ समवन दैट इज फुलफिल्ड, सो नाउ ऑटोमेटिकली योर ब्रेन वुड जंप ऑन टू द नेक्स्ट most lucrative, the next most fear of missing out thought, which is your career. And then you open Instagram or any other social media app and you see someone who is either younger than you, older than you, same age than you, more successful than you, has achieved so much more than you. And now what happens? You have a fear of missing out for your career, कि तुमने कुछ नहीं करा, कि तुम कितने बड़े लूजर हो. एंड गेस व्हाट? द चेरी ऑन टॉप इज दैट या तो इस सर्टन समवन जो कि इतना सक्सेसफुल अपनी लाइफ में ऑनलाइन दिख रहा है, जो या तो उसकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, बिकॉज इट इज अ डिस्ट्रैक्शन. हैविंग अ पार्टनर और अ फीमेल और समवन इज अ डिस्ट्रैक्शन. या फिर अगर इसकी लाइफ में कोई पार्टनर है तो वो उसको बहुत सपोर्ट करता है, बेटर देन योर्स. इसका पार्टनर इज बेटर देन योर्स, उसको सपोर्ट करता है, वेर एज तुम्हारी लोज चिक 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 बज रही है अपने पार्टनर से.
तुम रोज क्लास रहे हो, तुम्हारी रोज आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, एंड तुम अपने अनसक्सेसफुल होने का ब्लेम अपने पार्टनर पे दे रहे हो. सो अब तक तो फियर ऑफ मिसिंग आउट जिस भी चीज, बट अब नाउ योर फियर ऑफ मिसिंग आउट इज ऑन योर करियर बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, जिसके ना होने पर तुम्हें सेम फियर ऑफ मिसिंग आउट था बिकॉज यू डिड नॉट हैड अ पार्टनर. सो नाउ व्हाट डू? That's on you. You kick them out, you don't kick them out, that's on you. But the grass is always greener on the other side. The idea of having a relationship, not ships, ship seems very fascinating when you're single. But it is only जब तुम्हें सच में वो पार्टनर, वो सर्टन समवन मिल जाता है, that you get to know कि ये चीज फ्री में नहीं आती. This is not the thing that you imagine कि good things only, good vibes only, बस कुच्चू पुच्चू क्यूटी मोमेंट्स ना ना. This has more to it. और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, कितने फकअप्स होते हैं, बहुत चीजें होती हैं उसके अंदर. When you don't have it, there is a void, right? When you don't have a relationship, तुम्हारे माइंड में एक void है, एंड जो दिमाग है ना वो ऑटोमेटिकली उस void को सिर्फ अच्छी चीजों से भरता है, सिर्फ प्यारे मोमेंट्स, सिर्फ गुड मोमेंट्स, सिर्फ ऐसी चीजों को तुम्हें अच्छा फील कराए और ये फील कराए कि काश होता. बट इट इज ओनली तुम्हारे पास वो चीज़ एक्चुअल में आ चुका है, यू रियलाइज कि उसकी असल में कॉस्ट क्या है और कितनी बड़ी है, तुम उसको अफोर्ड कर भी सकते हो कि नहीं. नाउ दिस इज द वेरी रीजन वाई यू गो टू द जिम एवरी सिंगल डे, बिकॉज यू आर स्केर्ड कि अगर तुम आज जिम नहीं गए तो कोई और जाएगा और तुम स्मॉल रह जाओगे, तुम छोटे रह जाओगे, तुम्हारा साइज नहीं बढ़ पाएगा, बट वो तो जिम कर रहा है. सो यू कैन अफोर्ड मिसिंग आउट because you just might remain small. If you miss out today, there is that one person who won't miss. He would still show up, he would still do the workout. You don't enjoy working out, you don't, but that fear of missing out is why you go to the gym every single day. Similarly, why do people drink alcohol? I have friends who drink fuck ton of alcohol because again they have this fear of missing out, because they feel कि उनको जज करा जाएगा, एंड सबसे बड़ा रीजन कि they just might miss out on this opportunity of being able to drink alcohol. I have seen people जो कि excited होता है कि इस दिन को ना दारू पीने को मिलेगी. So yeah, that's very real. Another thing is कि हम बहुत superior मान लेते हैं. I have seen people with low self esteem, जो कि majority बंदों की low self esteem होती है. Most of the men out there, they're not confident in themselves. They're not confident in their own beliefs, and because of this whole fear of missing out, they let people make them feel small. They feel that they are less and they feel others are superior, and that is why I have seen them drink. I have seen them get into relationships which were not good for them. I have seen them do so much that was only harming them in the long run. Because दारू पीने की अपॉर्चुनिटी हर बार तो नहीं मिलती ना. इट इज़ वेरी फ्यू टाइम्स की तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड विल यू मिस आउट ऑन दैट? Will you allow yourself to get judged by these other losers, imbeciles who have not achieved anything? But again, the human mind is not meant to differentiate between all of these things. हम तो primarily driven है ना to belong somewhere, and if we are not belonging, हम कहीं ना कहीं अपने आपको isolate कर रहे हैं, which is not an easy thing to do. It takes courage to isolate yourself because you are not naturally hardwired to do that thing. So yeah. So what was so if you don't keep your fear of missing out or FOMO in check, then even though it is a very powerful tool, it still has the power to destroy you and definitely would take you to a point of no return.